What is metamorphosis? It is the process of transformation of young one into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Metamorphosis. Not all egg-laying animals undergo metamorphosis. Can you think of some egg-laying animals of which young ones have the same body structure as adults? Most fish, reptiles and birds do not undergo metamorphosis. Human babies also undergo many changes in their body till they grow into adults. Can we say that these changes add up to metamorphosis? Human babies are born with all the parts that an adult has. When a baby changes into an adult, there is no drastic transformation in the body form. It is a simple growth process. तो ह्यूमन बेबीज में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता, दे सिंपली ग्रो, क्योंकि जो एक अडल्ट इंडिविजुअल में बॉडी पार्ट्स होते हैं या जो भी होता है वो इनिशियल स्टेज से ही होता है. बस ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बेबीज में क्या होता है, ग्रोथ होती है. ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक इन्फेंट है, उसके बाद बड़ा हुआ, फिर अडल्ट में चेंज हुआ. ठीक है, तो क्या है, ह्यूमन बेबीज डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, दे सिंपली ग्रो. The word metamorphosis, originally having only this biological sense, is now also used in everyday language to indicate any transformation or change in form. Butterflies generally reproduce in the spring. Fertilization in butterflies is internal. The female butterfly lays eggs, generally on the underside of a leaf. After 7 to 10 days, each egg hatches into a larva or a caterpillar. The caterpillar looks like a worm and has a characteristic pattern on its skin. It feeds voraciously on green leaves and grows bigger. To accommodate its growing body, the caterpillar sheds its skin many times. After the caterpillar has eaten enough food, it hangs upside down on a leaf, sheds its skin, and secretes a protective covering around itself. This stage is called the pupa. The caterpillar in this stage is said to pupate. This is also known as the resting stage, because in this stage no movement or feeding takes place. But inside the pupa, the caterpillar undergoes a series of transformations. And finally, an adult butterfly emerges from the pupa. Arrange the stages of the life cycle of butterfly in the correct order. So this is the life cycle of a butterfly: egg, caterpillar, pupa, then adult. Is it clear? This is the life cycle of a butterfly. In some insects, such as the cockroach and grasshoppers, the metamorphosis has only 3 stages: egg, nymph, and adult. They do not have the pupa stage. So this is the This life type of cycle metamorphosis of cockroach. is sometimes referred to as incomplete metamorphosis. ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, जिसमें पहले एग होता है, एग के बाद निम्फ होता है, फिर अडल्ट. सो दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस.
Frogs reproduce during the rainy season, and fertilization is external, and it takes place on the surface of water. The eggs look like a gelatinous mass with black specks. This mass is called frog spawn. After 30 to 40 days, the eggs hatch into tadpoles. Does it look like a frog? It looks like a small fish with a tail. Initially, it consumes the spawn jelly, and then it starts searching for food. A young tadpole breathes through external gills. Tadpoles are voracious eaters. They are omnivorous. They feed on both plant and water insects. After about 9 weeks, the tadpole loses its gills and develops lungs. So, now it has to swim to the surface to breathe. A tadpole with limbs and a tail is sometimes referred to as a froglet. Finally, the froglet loses its tail and looks like a small frog. Soon it grows into an adult frog and is capable of reproduction. This completes the life cycle of the frog. Arrange the stages of the life cycle of frog in the correct order. So this is the life cycle of a frog. Eggs, then tadpole with legs, and then frog. So this is the life cycle of a frog. Is it clear class? पहले eggs lay करता है, उसके बाद tadpole में convert होता है, tadpole के बाद tadpole with legs, and then ultimately frog. So this one is a mind map. Animal के young ones जो similar to adults होते हैं that grows, और different होते हैं जो अपने adults से that undergoes metamorphosis यानी drastic changes in body forms. जैसे आपको दे रखा है example life cycle of a butterfly and life cycle of a frog. Is it clear? बाद NCERT के questions discuss कर लेते हैं. Importance बताना है reproduction का organisms में. तो reproduction क्या है? एक biological process है जिसके through living organisms जो है अपने offsprings produce करते हैं जो कि उनके जैसे होते हैं. Living organisms reproduce किसलिए करते हैं? ताकि उनका जो number है वो maintain रहे for the continuation of their species. उसके बाद है fertilization का process बताना है. Fertilization का मतलब क्या होता है? Fusion of male and female gametes. मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ से रिलीज होते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से. स्पर्म होता है मेल गैमेट जो कि रिलीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और ये जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं. देन दे ट्रेवल थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स वेयर दे मीट द एग्स, हेंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. उसके बाद है यू हैव टू टेल द आंसर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? दैट अकर्स इन फीमेल बॉडी एंड tadpole develops into adult frog by the process of metamorphosis, or the number of nuclei present in zygote is 1. उसके बाद true false are there. You have to tell is it true or false. Oviparous animals give birth to young ones. So this is true or false. It is false because oviparous animals lay eggs. ठीक है? Next is each sperm is a single cell. So this one is true or false. This is true. External fertilization takes place in frogs. This is true. Then a new human individual develops from a cell called gamete. It is false. Egg laid after fertilization is made up of single cell. That is true. Amoeba reproduces by budding. This one is false because amoeba में reproduction कैसे होता है? By binary fission.
उसके बाद है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दिस वन इज फॉल्स। बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दिस वन इज ट्रू। Zygote is formed as a result of fertilization, this is also true. An embryo is made up of single cell, this is false. उसके बाद you have to give two differences between a zygote and a fetus. Zygote is fertilized egg that is formed after the fusion of sperm and egg, और zygote divide करता है several times to form an embryo, और fetus क्या है, ये एम्ब्रियो की स्टेज है that shows all the recognizable body parts of mature organism and embryo gradually develops into a fetus. उसके बाद आपको asexual reproduction बताना है और उसके दो मेथड्स देने हैं। asexual reproduction क्या होता है, ये एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें फ्यूजन नहीं होता मेल और फीमेल गैमेट्स का। दो मेथड्स बताए गए हैं आपको, दैट इज बाइनरी फिशन और बडिंग। बाइनरी फिशन आप सबने देखा अमीबा में, और बडिंग का प्रोसेस हाइड्रा में। नेक्स्ट है इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, एम्ब्रियो किसमें एम्बेड होता है, दैट इज इन यूटेरस। उसके बाद है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस अभी डिस्कस करा हमने, ये वो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वन इनटू अडल्ट, यंग वन का अडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंसेस बताने हैं आपको। इंटरनल इज इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी, एंड एक्सटर्नल इज इट इज आउटसाइड द फीमेल बॉडी। नेक्स्ट इज क्रॉसवर्ड्स, process of fusion of gametes is called fertilization. Type of fertilization in hen is internal, term used for bulges observed on the bodies of hydra, that is bud. Next, egg are produced here, it is ovary. Sperms are produced in this male reproductive organs, it is testes. Another term for fertilized egg is zygote. These animals lay eggs, oviparous, and a type of fission in amoeba is binary. ठीक है, तो क्लास विद दिस योर चैप्टर एंड्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आप लोग आज क्वेश्चन आंसर्स और कीवर्ड्स लिख लेना। कीवर्ड्स आई विल प्रोवाइड यू विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो टुडे योर वर्क विल बी यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी, और आप सब चैप्टर्स जितने भी हमने करे हैं सारे रिवाइज करते चलिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।